Welcome to lecture 3 of Topological Dynamics, and today we will study the topic expansive homeomorphism. Before starting with the definition, I would like to explain what is this theory of expansiveness. So there basically is a core question which is can two distinct points remain close forever, both forward and backward. ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि क्या दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर आपके पास, तो वो हमेशा क्लोज रह सकते हैं फॉर एवर, मीन्स इन फ्यूचर, मतलब आगे भी, इन टाइम एंड बैकवर्ड भी इन टाइम. सो एक्सपेंसिवनेस इसको आंसर करती है और एक्सपेंसिवनेस कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है. ऑलराइट. और एक एक्सपेंसिव सिस्टम क्या करता है? एक्सपेंसिव सिस्टम forces distinct points to eventually separate by a definite amount. ठीक है, एक्सपेंसिव सिस्टम की बेसिकली थ्योरी रहती है. एक्सपेंसिव सिस्टम क्या करता है? कोई भी दो डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स, मतलब कोई भी दो पार्टिकल्स अगर वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, नो मैटर, चाहे वो जितना भी क्लोज रहे हो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक्सपेंसिव सिस्टम कहता है, एक्सपेंसिव सिस्टम के अकॉर्डिंग बेसिकली जो डायनेमिक्स होगा, इट विल इवेंचुअली pull them apart. So at some point of time, they will be pulled apart from each other. Okay, so this is what the theory of expansiveness says. ठीक है, इसी intuition पे based we have the definition of expansive homeomorphism. ठीक है, it will be related to this concept. So let me define. This is the definition of expansive homeomorphism. Okay. So let me take a dark color. Okay. So let capital X comma D be a metric space. You all must be knowing हर एक metric space एक topological space होता है with the metric topology associated with it. So let capital X comma D be a metric space. A homeomorphism H from X to X is said to be
एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म। तो एक होम्योमॉर्फिज्म को हम एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल्टा बेसिकली आर प्लस को बिलोंग कर रहा है, अ रियल नंबर डेल्टा। तो okay, let me write first and then I will explain. Such that whenever xy in capital x is not equal to y, there will exist some n in integer such that the distance between fn x, fn y, okay, I have written h over here. Let me write. Okay. Is strictly greater than this delta. Okay, so मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी कि ये थ्योरम मेरी इंट्यूशन से कैसे रिलेटेड है जो मैंने अभी आपको दी, और ये थ्योरम इसे याद कैसे, सॉरी थ्योरम नहीं, डेफिनेशन, इसे याद कैसे रखें. ओके सो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि मेरे पास सबसे पहले एक जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, द स्पेस विच वी आर डीलिंग विद इज़ अ मीट्रिक स्पेस. वाई डू वी नीड अ मीट्रिक स्पेस? क्योंकि हमें वो दो पॉइंट्स को पुल करना है अपार्ट, है ना. सो विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ, मतलब we need to separate them by some definite amount of distance, मतलब definite distance. So basically we need this metric function to be there, right? So here this is a metric space which we are dealing with. Expansive homeomorphism, as the name suggests, we are dealing with the homeomorphism, but it is going from x to x. So this is the thing to be highlighted. And हम इसे एक्सपेंसिव बोलेंगे अगर मुझे एक ऐसा डेल्टा मिल जाए रियल, ठीक है, इन आर प्लस, सो डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, such that if I pick any two pair of points, distinct points, ठीक है, for all x y in the space capital X, such that x is not equal to y, this definition says that I should be getting some n in integer such that the distance between fnx and this fny becomes strictly greater than delta. Again, I did this mistake. I should be writing f over here. Right. So, देखो, इंट्यूशन से ऐसे रिलेटेड है कि एनी टू पेयर ऑफ पॉइंट्स, मेरे को एक ऐसा डेल्टा मिल रहा है सच दैट इफ आई पिक एनी टू पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन आई एम एबल टू पुल देम अपार्ट, यानी कि उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस डेल्टा मैं कर पाऊंगी. ठीक है, थोड़ी बहुत इंट्यूशन आ रही होगी. सो बेसिकली वी आर इन नीड ऑफ सच डेल्टा, और इस डेल्टा को वी कॉल एज एक्सपेंसिव कांस्टेंट. ठीक है, इस डेल्टा को हम एक्सपेंसिव कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है, एंड देयर इज अ स्मॉल नोट that if we have this delta, so for any delta delta dash, let's say, strictly lesser than this delta, the definition will hold. So this delta dash is also an expansive constant. तो अगर आपको एक expansive constant मिलता है तो आपको uncountably many expansive constants मिल जाते हैं. ठीक है, all right.
अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एक्सपेंसिव होमियोमॉर्फिज्म के. सो वी हैव consider the metric space R with respect to D, where this distance function is defined like this, and that means it is a usual metric in R, and we have a function f, okay, which is from R to R such that f of x equal to alpha x, so it is dilation where alpha is different from 0, -1 and 1. ठीक है, तो हम यहाँ पे शो करेंगे that f is an expansive homeomorphism. मैं अल्फा जो मैंने प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल दिया है, ठीक है, उसमें कहीं भी मैं मतलब अल्फा पिक करती हूँ तो ये जो मैप है it will become an expansive homeomorphism. Okay, so let us have a look. So for that, basically I need a single delta strictly greater than 0. Okay, so मेरा claim है that every delta in R which is strictly greater than 0 is an expansive constant for given homeomorphism F. So first of all, observe that F is a homeomorphism. ठीक है, that you can clearly check. Bijective continuous, inverse continuous, that you can check. So हम बस बात करेंगे कि कैसे ये एक एक्सपेंसिव होमियोमॉर्फिज्म है, और अगर मैं कोई भी डेल्टा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव लेती हूँ सो इट विल एक्ट एज अ एक्सपेंसिव कांस्टेंट. सो लेट डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्ररी. मैंने कोई भी एक ऐसा चूज कर लिया है. So okay, and let x comma y belong to R such that x is not equal to y. They both are different. Now for हमें basically क्या चाहिए? We need n in integer such that distance between fnx, fny becomes strictly greater than delta. That happens if and only if. So distance between x and y जैसे हमने define किया था. So what will be distance between these 2 points? It will be fnx minus fny mod strictly greater than delta. Okay. Now what is this thing? fnx will be alpha raised to the power of n x. क्योंकि fx is alpha x, you can check f square x will be f applied on alpha x, so it will be alpha square x, and similarly fnx will be alpha to the power of nx, so here we have alpha to the power of ny, and that is if and only if mod alpha, either write mod alpha की power n or mod alpha whole की power n mod x minus y is strictly greater than delta. Okay. Now that is if and only if mod alpha की power n is strictly greater than delta over mod x minus y, if and only if. Okay, so I am basically taking log on both sides. Okay, so I'll get n log mod alpha, क्योंकि log एक increasing function होता है,
सो इसलिए आई हैव दिस थिंग. ओके, नाउ यहां तक तो हम पहुंच गए, पर अब यहां से दो केसेस बनते हैं. ठीक है, पहला है केस 1. अगर मॉड अल्फा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हुआ, देखो ये भी बताती हूँ, यही दो केसेस क्यों बन रहे हैं. तो हमने हमारी पूरी रियल लाइन आर में से 3 पॉइंट्स को रिमूव किया है, -1, 0 और 1. तो या तो पोर्शन बनता है हमारे पास जब मॉड अल्फा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. ठीक है, व्हेन मॉड अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. या फिर हमारे पास पोर्शन बनता है between this part, so that is when mod alpha is lesser than 1 and strictly greater than 0, क्योंकि मुझे ये 0 हटाना है. so there is like this. okay, so इसलिए ये दो केसेस बनते हैं. अब ये दो केसेस को अलग अलग क्यों डील करना पड़ गया, क्योंकि लॉग का बिहेवियर इस पे अलग होता है. ये होता है लॉग का ग्राफ, और this is log 1 which is 0. मैंने सही से ड्रॉ नहीं किया है, ये बिल्कुल मतलब कुछ ऐसा सा जाता है like this. okay, somewhat like this, it's like this. okay, अब अलग अलग नेचर क्या हुआ. ठीक है, so let me show you. जब we have mod alpha strictly greater than 1, so we are basically in this portion. ठीक है, तो इस पोर्शन में लॉग पॉजिटिव है, राइट, एंड व्हेन mod alpha is strictly greater than 0 and lesser than 1, so we are in this portion, और इसमें लॉग नेगेटिव है. ठीक है, इसमें लॉग mod alpha पॉजिटिव है और इसमें लॉग mod alpha नेगेटिव है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है इनइक्वालिटी में अगर जैसे मैं लॉग mod alpha को उस साइड लेके जाना चाहती हूँ, ठीक है, so the sign will not change if this quantity is positive. And we'll having this. In this case, क्योंकि log alpha mod alpha नेगेटिव है, अभी मैंने दिखाया ना इस वाले केस में, तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा. राइट, नाउ इन बोथ द केसेस मुझे एक n in integer value निकालनी है. I need to ensure that I will get such n which is in this case strictly greater than this value and in this case strictly lesser than this value. ठीक है, मुझे ऐसा इंश्योर करना है. तो सबसे पहले इस केस को देखते हैं. ठीक है, why it will happen. So by आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, देखो जो राइट हैंड साइड में है, जो राइट साइड में है मेरे पास, वो एक रियल नंबर है.
और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि हर एक रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिलेगा. सो देयर विल एग्जिस्ट सम n in natural number such that your n will be strictly greater than this value. I'm saying that this is r. Okay, let us suppose, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, let's say the let r is this value, log delta mod x minus y over log mod alpha. All right, now okay, अब यहाँ पे if I take n to be gif minus, okay, gif of r minus 1, so as n is gif of r minus 1, so it is strictly lesser than gif r, and gif value less than equal to r होती है. So we will get that this n is coming out to be strictly lesser than r, right? And in this case I'm getting some n which is strictly greater than this r. So as I needed, I'm always able to get some n in integer, जो कि मुझे यहाँ पे बताना था. ठीक है, so hence we have shown कि for any delta, ठीक है, it will basically act as a expansive constant, क्योंकि मैंने कोई भी डेल्टा उठाया था, ठीक है, और मैंने कोई भी दो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स ले लिए थे इन द स्पेस कैपिटल R, एंड व्हाट आई नीड टू शो, मुझे क्या दिखाना था कि एक ऐसा n इन इंटीजर एग्जिस्ट करे सच दैट द डिस्टेंस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा. तो बस मैंने इक्वेशंस देखती गई कि इसके लिए मुझे n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस वैल्यू, एक में मुझे मिला दिस वैल्यू होना चाहिए, एक में दिस वैल्यू होनी चाहिए, एंड आई एम एबल टू गेट सम n, ठीक है, अकॉर्डिंगली. सो हेंस दिस implies that delta is an expansive constant for given f. Which is from r to r such that f of x equal to alpha x. Okay, now let's have a look at some remarks. Okay, so here I will justify, जैसे अभी मैंने ऊपर बात करी, हमने r with respect to usual metric space लिया था and f from r to r लिया था where f of x equal to alpha x, लेकिन मैंने alpha r minus 0 minus 1 में से लिया था. Now I will explain what if alpha is 0 minus 1 और 1, तो तब मतलब बेसिकली मैं दिखाने वाली हूँ कि उन केसेस में वो एक एक्सपेंसिव होमोमॉर्फिज्म नहीं बनता है. इनमें तो बनता है, अभी मैंने शो किया, एंड इट इज बेसिकली एन एक्सपेंसिव होमोमॉर्फिज्म फॉर इन फैक्ट any delta strictly greater than 0. Okay, so let's see this. So if alpha is 0, f of x is 0 is not a homeomorphism, clearly not 1 1. If alpha is 1, this is basically an identity map in this case. So this is a homeomorphism. अब हमें यहाँ पे justify करना है it is not expansive. तो not expansive के लिए आप बस definition का negation कर दो.
देयर एग्जिस्ट डेल्टा, एक डेल्टा ढूंढ के निकालना था, अब हो जाएगा फॉर एवरी डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट चाहिए थे हमें, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन कैपिटल एक्स, एक्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम वाई, देयर एग्जिस्ट सम एन इन इंटीजर चाहिए था हमें, फॉर ऑल एन इन इंटीजर distance between fnx and fny not strictly greater than delta. तो basically this is the negation. तो हम let करते हैं delta be arbitrary, okay, यानी कि be given, कोई भी डेल्टा में गिवन है, लेट्स से हमें ऐसे डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स ढूंढ के निकालने हैं. सो टेक x इक्वल टू डेल्टा बाई 2, y इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई 2, then x y belong to R and x is not equal to y. तो हमने दो पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ढूंढ लिए, ठीक है. Now let n belong to integer. Consider distance between fnx and fny. So आपको पता है कि f एक आइडेंटिटी मैप है, तो fn भी आइडेंटिटी मैप ही रहेगा. So this distance will be the distance the way we have defined. So basically this is distance between x and y. So this is mod x minus y, because fnx is x and fny is y. So this is mod x minus y and delta by 2 minus delta by 2. So this is delta, right? And which is not strictly greater than delta. And क्योंकि n in integer arbitrarily choose किया गया था, so this holds for all n in integer. So hence we have shown in this case. Similarly, इसी तरीके से you can also show कि जब alpha minus 1 भी होगा ना, then in that case too we will be choosing these pair of points only, जो अभी हमने choose किए थे ना, ये x to be delta by 2 and y to be minus delta by 2, अब भी हम यही points लेंगे, ठीक है, in case of this minus x. तो आप देखोगे कि मतलब बिल्कुल सेम ही आर्ग्यूमेंट जैसे यहाँ पे बने हैं वैसे इस वाले केस में भी बनेंगे, ठीक है. सो दिस इज left as a homework. Okay. Now there is a remark, second remark, so which says that if this is a metric space, ठीक है, R with respect to D, and on this if you have an isometry, अगर इस पे आपके पास एक isometry है, is not an expansive homeomorphism. Okay, so let's try to justify this. ऐसा क्यों हो रहा है? So let us suppose that there exists H from R to R, which is an isometry. So this means the distance between the, if I take any two points, then the distance between their images is also same, okay?
So the distance between hx hy is same as distance between x and y. Okay, now distance between x and y is defined to be mod x minus y, क्योंकि यहाँ पे यूजुअल मीट्रिक है. ठीक है. अब now see, I will show for all n in integer hn is an isometry. So first of all, for n equal to 2, let us consider the distance between h square x, h square y. So it is distance between hx minus hhy. Okay. अब क्योंकि h एक isometry है, so the distance between the images is same as distance between the domain points. So hx, hy. Again, h is an isometry, so this is the distance between xy, which is mod x minus y. For similarly, this goes, मतलब ऐसा ही argument you can give for n equal to 3. So this is h composed h square x minus h square y, which is distance h square x square y, which is distance in similar pattern. Okay, we have already shown, so we can write directly that the distance between h square x square y is simply mod x minus y. All right. Okay, one more thing. Okay, let's see. And similarly, for any n equal to k, in such a way you can prove this. Okay. Now, basically, we have proved that distance between hnx minus hny, जो कि कुछ नहीं mod hnx minus hny होगा. This is same as mod x minus y for all n in natural number. अभी तक हमने ये प्रूव किया है. ठीक है. अब हमें प्रूव करना है कि ये बेसिकली नेगेटिव यानी कि इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स यूनियन 0 के लिए भी ये होल्ड करता है. ठीक है. So let's see for n equal to minus 1. Let us consider this thing. So let's say कि h inverse x x dash है और h inverse y y dash है. So we have this to be mod x dash minus y dash. Now x dash okay, so x dash minus y dash जो भी होगा, if I apply h on this, क्योंकि ये एक isometry है, h is an isometry, so this distance will be preserved, यानी कि distance same रहेगा. So what is hx dash? It is x, hy dash is y. So we have proved कि mod h inverse x minus h inverse y, this is nothing but the distance between h inverse x, h inverse y is same as the distance between x and y, mod x minus y. Similarly, for n equal to minus 2, if I consider h minus 2 x, अच्छा, if अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है कि h minus 2 क्या है, it is nothing but h
H इनवर्स का कॉम्पोजिशन विद H इनवर्स, ठीक है। अगर मैं H की पावर माइनस n की बात करती हूँ, सो इट इज H इनवर्स का कॉम्पोजिशन विद H इनवर्स n नंबर ऑफ टाइम्स. This is this, okay. This I think I forget to tell. So this will be written, okay, this can be written like this. And क्योंकि अभी हमने प्रूव किया H इनवर्स एक आइसोमेट्री है, so this will be H inverse x minus H inverse phi, and this is same as mod x minus phi, अभी ऊपर ही देखा है हमने. And similarly it goes like this, ठीक है. So what we have, that distance between h and x, h and y हमने सबके लिए compute किया, and this is mod x minus y for all n in integer and for all x y in the space R such that x is not equal to y. हमें प्रूव करना था कि कोई भी आइसोमेट्री कभी भी एक एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म नहीं हो सकता. तो लेट करो मैं कोई भी डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है, लेती हूँ. तो मुझे क्या दिखाना होगा, दैट देयर एग्जिस्ट पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स सो अगेन वो पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को जैसे हम प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स में ले रहे थे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी लेंगे. सो वी टेक दोज पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स to be x delta by 2 and y is minus delta by 2, where x is not equal to y, such that the distance between okay, so h and x, h and y जो कि अभी हमने कंप्यूट किया है, mod x minus y रहेगा. So this is delta and it is not strictly greater than delta for all n in integer. और यही हमें शो करना था in order to show that any isometry on R is not an expansive homeomorphism. So this implies जो हमने मैप ले रखा है H जो कि R से R पे एक आइसोमेट्री था, such that the distance between hx hy is same as the distance between x and y. Is not an expansive homeomorphism. Perfect. Okay. Now, just one more example like this. मतलब इसी से related है. So we have, if I take this map from R to R, which is the ट्रांसलेशन मैप x प्लस ए, तो हमें पता है क्योंकि एक आइसोमेट्री होता है, इफ यू हैव अ लुक बिटवीन, से इफ यू हैव अ लुक एट डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स एफ वाई, सो इट इज मॉड x प्लस ए माइनस y प्लस ए, and that is mod x minus y, the distance between x and y. So therefore it is an isometry, or from the above result that any isometry on this metric space R with respect to D, that usual metric, is not an expansive homeomorphism. So this implies this map जो हमने ले रखा है f of x equal to x plus a is not an expansive homeomorphism. ठीक है. So just to summarize, आज हमने पढ़ा definition of expansive homeomorphism, so यहाँ पे जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की थी,
first of all, the space we are dealing with is a metric space. So let capital X comma D be a metric space. A homeomorphism from the space capital X to the space capital X is said to be expansive अगर एक ऐसा, ठीक है, अगर एक ऐसा डेल्टा strictly greater than 0 मिल जाए such that for every pair of distinct points in capital X I should be able to get some n in integer such that the distance I'm able to separate them apart. So such that the distance this HNX comma HNY is strictly greater than delta. Okay. So this is the definition of expansive homeomorphism. और इस डेल्टा को ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव कांस्टेंट कहते हैं. ये हमने देखा, ठीक है. फिर हमने एग्जाम्पल मैंने रिमार्क बताया था, रिमार्क की फॉर्म में कि दिस मैप homeomorphism from R to R where we are dealing with this metric space R with the usual metric d of x comma y is equal to mod x minus y. So this was the very first point which I told you. इसको हम फर्स्ट पॉइंट देते हैं जिसमें हमने पढ़ा दिस मैप, दिस डायलेशन मैप f of x equal to alpha x where alpha is r मतलब coming from r minus -1 0 1. So this is an expansive homeomorphism. तो हमने देखा है एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म. और फिर मैंने यहाँ पे जस्टिफाई किया था कि फॉर अल्फा इक्वल टू 0 1 एंड -1 दिस f is not an expansive homeomorphism. ठीक है. और अगर आप एज हिंट याद रखना चाह रहे हो, सो हिंट द पेयर ऑफ पॉइंट्स विच वी यूज, क्योंकि हमें बेसिकली फॉर एवरी डेल्टा एक ऐसे मतलब दो ऐसे पेयर ऑफ पॉइंट्स चूज करने होते हैं सो दैट फॉर एवरी n the distance between fnx and fny is not strictly greater than delta. So those points are minus delta by 2 and delta by 2. ठीक है. जब भी हमने दिखाना था कि इट इज नॉट एक्सपेंसिव, हमने यही दो पेयर ऑफ पॉइंट्स चूज किए. फिर सेकंड में मैंने दिखाया था कि इफ आई पिक एनी आइसोमेट्री, again the metric space is same r with respect to d, so if I pick any isometry on r then it is not expansive. ठीक है. ये हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा कि कोई भी आइसोमेट्री एक्सपेंसिव नहीं होती है. ठीक है. इट इज नॉट एन एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म. और इसमें हमने क्या दिखाया था कि in fact for every n in integer the distance, if h is an isometry, the distance hnx hny is same as distance between x and y, that is simply mod x minus y. तो हर एक hn एक आइसोमेट्री बन रहा था. ठीक है. और उसमें भी हमने यही दो पेयर ऑफ पॉइंट्स चूज किए थे. एंड फाइनली इसी की वजह से the translation map is not an expansive homeomorphism where f of x equal to x plus a. Okay, so here we end this lecture. Hope you liked it.